Students, in this session, we shall discuss our aim will be to find out the normality of bench acid. पिलान देखो तुम्हारा जो बेंच रो रैक सब थुआ है सही रैक रे तुमको जो एसिड दिया जाए ताको कहते हैं बेंच एसिड. बेंच एसिड विल बी ऑलवेज डाइल्यूट एसिड. तुम सेठी हमें कौन सी मत पिलान को कंसंट्रेटेड एसिड दोना कारण से ढारी की कंसंट्रेशन इज वेरी हार्मफुल वेरी टॉक्सिक तेणु आम कंसंट्रेटेड एसिड दोना आम बेंच रो जो जिनस रखाई था डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट अल्काली एवं ऑर्गेनिक एसिड मध्य गोटे बेंच रे थाए दैट इज योर एसिटिक एसिड एवं अदर रिएजेंट्स मध्य तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस पाई कुमार नाइट्रेट एटसेट्रा तुम्हारा बेंच रैक रे दिया जाई था. तेणु ए जे रैक रो जो एसिड दिया जाई था दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2N. रिमेंबर जो रे बेंच एसिड दिया जाई था तुमको दैट इज अ डाइल्यूट एसिड तेणु बेंच एसिड इज अप्रोक्सीमेटली 2N. किंतु एठी आमे जो तुमको स्टैंडर्ड अल्काली दिया हिथबो जोटा तुम्हारे बेंच एसिड रो एग्जैक्ट नॉर्मलिटी केमति बाहर करबा सेतरे हमको तुमको गोटे नॉन अल्काली दिया हिथबो अल्काली नॉन अल्काली एवं यार नॉर्मलिटी तुम्हारो ए जे क्वेश्चन पेपर रे लिखि दिया हिथबो धरो नॉर्मलिटी मु लिखि देली 1.01 n/10 डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन उटे दिया हिथबो. तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन उटे दिया हिथि एवं बेंच एसिड दिया हिथि उटे 2N रो आमे 2N द कंसंट्रेटेड एसिड को गोटे डाइल्यूट अल्काली वेरी n बाय डेसिमल साइज रे केमिति बाहर करिया. तो एठी हमको तुमको तीनटा जिनस करिया को पड़ियो गोटे बेंच एसिड रो अप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी जानिबा को पड़ियो विथ टाइट्रेशन विथ दिस अल्काली सेटा मोटे गुटिए रीडिंग नबो एवं सेही गुटिए रीडिंग रे केते आसुची देखिबा तापर सेही वॉल्यूम टा यूज करबी हमें ताको डाइल्यूट करिया. डाइल्यूट करिकि सेही डाइल्यूट एसिड की ए n/10 आकार रे कैलकुलेशन करिया पड़ियो. एसो काहे की करा होछ देखो जेहेतु देखो एटा 2N एटा अछि n/10 धर एटा n/10 एटा अछि 2N तामेले एटे जे 20 टाइम्स डाइल्यूट एसिड एटा 20 टाइम्स डाइल्यूट एटा 20 टाइम्स कंसंट्रेटेड मन रखो अल्काली रे नॉर्मलिटी अछि 0.1 एटा अछि 2N काउन दिस 20 टाइम्स स्ट्रांगर. तो गोटे 20 टाइम्स स्ट्रांगर एसिड को आमे 20 टाइम्स डाइल्यूट अल्काली सहित टाइट्रेशन करि परिबा नाही काहे कि जदि हमें गुटिए ड्रॉप एसिड होबा 20 ड्रॉप्स कोन खाइबो 20 ड्रॉप्स अल्काली ता पई न्यूट्रलाइज करिया पई दरकार कारण बिकॉज़ दैट इज 20 टाइम्स डाइल्यूट. तेनु हमें 1 ड्रॉप जदि बेंच एसिड नबा ताले 20 ड्रॉप्स अल्काली पाइबा. जदि अल्काली 1 ड्रॉप निया जाय एटा पाइबा 1/20 ड्रॉप्स दैट मींस 1/20 जदि एटा धरो हैला 0.1 एटा आसबो 0.1/20 तो 0.1/20 एटा केबे हेले आसी आमे कैलकुलेशन नै परिबा नाही कहा द्वारा ए जे हमर जो ब्यूरेट तुमको दिया होची सेथरो 0.1 नै परिबा किंतु 0.1/20 ब्यूरेट रामे नै परिबा नाही. तेनु हमरो प्रथम काम हला हमको बेंच एसिड रो अप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करिया पड़ियो. एति काम आज आमे करिवा प्रथम काम करिवा अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ का नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. तो 0.2N दिया है 2N दिया है किंतु हमें ए जे 0.1 सहित कैलकुलेशन करी केते तार अप्रोक्सीमेट आसी बाहर करिया. तापर बाहर करिया कोन डाइल्यूशन फैक्टर केते टाइम्स ताको डाइल्यूट करके ए n/10 ऑर्डर को आनला कारण n/10 ऑर्डर को न आसीले हमें टाइट्रेशन करि परिबा नाही. n/10 ऑर्डर को आसीले हमें कोन करिया जदि 10 ml अल्काली दैथिबा तो एसिड 10 ml अप्रोक्सीमेटली निश्चय आसीबो किंतु एटा 10 जागर सेटा यदि 1 आसीला ताहाले हमें से कैलकुलेशन करि परिबा नाही. तेणु एठी जेहेतु हमें एटा माइक्रो ब्यूरेट नुहो तेणु जेहेतु एटा कॉमन ब्यूरेट तुमको क्लास रे दिया होची तेणु हमको एसिड को अप्रोक्सीमेटली n/10 ऑर्डर को आनिबा को पड़ियो एवं सेटा हमें किमिति करबा सेटा वर्तमान हमें मैडम देखि देबे किमिति अप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी कैलकुलेट करबा तापर किमिति डाइल्यूशन फैक्टर बाहर करबा किमिति डाइल्यूट करबा बुझला. एठी हम 20 टाइम्स अछि किंतु सेटा केते टाइम्स हबा सेटा हमें करबा बुझ पालो. तापर से डाइल्यूट एसिड यूज करी हमें
अल्काली एग्नेस्ट टाइट्रेशन करी जेहेतु अल्काली रो नॉर्मलिटी दिया जाई अछि हमें एसिड रो नॉर्मलिटी बाहर करी पाई तापर एसिड रो नॉर्मलिटी काट देले सेटा केते टाइम्स डाइल्यूट हला से डाइल्यूशन फैक्टर गुणी देले हमें कंसंट्रेटेड अल्काली रे बाहर करिया जेमते धर एज फॉर एग्जांपल एटा धर अछि n/10 एटा अछि 2n ताने इट इज 20 टाइम्स कंसंट्रेटेड जन तुमे डाइल्यूट एसिड रो जो नॉर्मलिटी बाहरिबो ता देहरे 20 गुणी देले बा 20 मल्टीप्लाई कर देले तुमे पाई दिबो कार तुमे बेंच एसिड रो नॉर्मलिटी पाइबो एई एग्जांपल पाई कहूची किंतु आमे केमिति करिवा देखो हमें वर्तमान एप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी ऑफ एसिड केमिति बाहर करिया ता पाई गुटिए गुटिए सिंगल टाइट्रेशन करबो से सिंगल टाइट्रेशन गुटिए टेबल ले हबो एठी लेखो डिटरमिनेशन ऑफ approximate normality of bench acid एटा हमें केमिति बाहर करिया देखो बर्तमान से गुटिए ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 ओनली 1 अच्छा एथरे वॉल्यूम ऑफ अल्काली से 10 मिलीलीटर नबा तापर एठी बिरेट रीडिंग इनिशियल बिरेट रीडिंग लिखिबा फाइनल बिरेट रीडिंग लिखिबा डिफरेंस लिखिबा एटा बहुत कम आसीबो 1 भितरे आसीबो हला इनिशियल बिरेट रीडिंग लिखिबा फाइनल बिरेट रीडिंग लिखिबा डिफरेंस लिखिबा धर डिफरेंस आसीला धर मो लिखली x मिलीलीटर एट x मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 1 मच लेस देन 1 किंतु हमर जदी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ थाता 10/10 सेटा भी n/10 थाता ताले एटा 10 ml को सेटा निश्चय पाखा पाखी 10 हुई थाता किंतु एठी जेहेतु सेटा बहुत हाई कंसंट्रेशन लो अछि तेनो एटा निश्चय 10 थारु यथेष्ट कम आसी तेनो धर हमर आसला x मिलीलीटर तेनो वर्तमान एई x मिलीलीटर यूज करके हमें किमिति बाहर करबा अप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी देखो वॉल्यूम ऑफ अल्काली दिया है 10 नॉर्मलिटी ऑफ अल्काली बोधे मु सेठी लिखथिली 1.01 ना 02 काउंट लिखथिली सेटा एटा दिया है स्टैंडर्ड अल्काली धरो स्टैंडर्ड अल्काली एटा तो क्वेश्चन पेपर लिखाई तो धरो 1.0/02 n/10 तेन 10 ml नेलो अल्काली तार नॉर्मलिटी हैला 1.02 n/10 एवं वॉल्यूम ऑफ एसिड आसीला x यार नॉर्मलिटी केते नॉर्मलिटी क्वेश्चन तो यार नॉर्मलिटी केते हेबो यार नॉर्मलिटी हबो तो नॉर्मलिटी ऑफ बेंच एसिड इज इक्वल टू बेंच एसिड इज इक्वल केते हेबो ताले एक्स्ट्रा सेटी डिवाइड करबा अर्थात 10 into 1.02 n/10 divided by x तेणु जानतु जानो एथ्रु नॉर्मलिटी देखो एथ्रु नॉर्मलिटी आसीला बेंच एसिड रो एप्रोक्सीमेट नॉर्मलिटी आसीला तेणु ए जे इनिशियल कैलकुलेशन लो इनिशियल गुटिए कैलकुलेशन लो तुमे एप्रोक्सीमेटली नॉर्मलिटी जानियो तापरे हमें किमिति डाइल्यूशन फैक्टर बाहर करना केते नै कि ताको डाइल्यूट कले हमर तार अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ आसीबो केते अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ आसीबो n/10 ऑर्डर तेनो डाइल्यूशन फैक्टर किमिति बाहर करिया डिटरमिनेशन ऑफ डाइल्यूशन फैक्टर देखो डाइल्यूशन फैक्टर हमें किमिति करिया एटी हमर 100 ml एसिड बाहर करबा ऑफ द ऑर्डर ए नॉर्मलिटी हमें देखो हमें गुटे 100 मिलीलीटर नबा गुटे मेजरिंग फ्लास्क सेई थरे केते मिलीलीटर नेई 1000 कहू 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर नबा योर मेजरिंग फ्लास्क बा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एबो सेई थरे केते मिलीलीटर नेई 100 मिलीलीटर कले सेटा केते टाइम्स डाइल्यूट हला सेटा हला कोन डाइल्यूशन फैक्टर धरो मु एठी नेली 20 मिलीलीटर नै कि 100 मिलीलीटर कर देली ताले हमर केते टाइम्स डाइल्यूट हे गला 5 टाइम्स तेनो सेठी डाइल्यूशन फैक्टर हला 100/20 धरो गुटे मिलीलीटर नै 100 मिलीलीटर कली मु कहबी डाइल्यूशन फैक्टर केते हला 100/1
So if 1 milliliter is diluted up to 100 milliliter, then this is called 100 times diluted. तेणु आम केते टाइम्स डाइल्यूटेड है जाना केमी देख से थ्रू आम वॉल्यूम ऑफ एसिड केते नबा वॉल्यूम ऑफ एसिड केते लेकी ताको 100 मिलीलीटर करबा सेटा कैलकुलेशन वर्तमान करबा देखो आम नहीं छे एवं आम देखो एठी नबा 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर नबा ताको आम को ऑर्डर रो करबा ताको आम करबा 1.02 n by 10 ऑर्डर रे करबा कारण हमर होल एम टू dilute the acid not up to n but up to of what n by 10 or 1.02 n by 10 तेणु आम अल्काली जो नॉर्मालिटी दिया जाइछि आम एसिड टा वर्तमान सही नॉर्मालिटी रो इक्विवेलेंट करबा को पड़िबो तेणु 2n हेले आम कैलकुलेशन कर परिबानी किंतु हमको ताको सही n by 10 ऑर्डर को आनिबा धरो एई ऑर्डर को आम आनिबा किमिति आम 100 ml एई भलिया किमिति करबिला अर्थात आम केते न v1n1 v2n2 एटा धर 100 ml एति करबा हमें अछि हमर केते हमर नॉर्मालिटी केते बर्तन पाइछे एठी हमें वॉल्यूम बाहर करबा वॉल्यूम ऑफ केते वॉल्यूम नबा नॉर्मालिटी केते बाहर छै अप्रोक्सीमेट नॉर्मालिटी हला 10 by x 1.02 n by 10 देखो हमें एई थ्रू केते वॉल्यूम हमर बर्तन यार अप्रोक्सीमेट नॉर्मालिटी नॉट 0.2n not 2n but the normality is like this your 10.1 এটা যেটা বাহালা আমার 10 into 1.10 into 1.02 n by 10 by x এইটা হচ্ছে কোন এইটা হচ্ছে নরমালিটি অফ অ্যাসিড আমি এই থ্রু কেতে ভলিউম নেই 100 ভলিউম কলে তার নরমালিটি আসবে কেতে 1.02 n by 10 তেণু আমি বর্তমান জানি এইটা বর্তমান এই ভিটা বাহার দিলা देखो 1.02 n by 10 1.02 n by 10 पटियाला so v is equal to 100 into x v is equal to 100 into x by 10 100 into x by 10 that means that is your 10x remember तेणु हमें 10x नहीं 10x कौन 10s exceed नहीं x टा कौन x टा होती डिफरेंस इन द फर्स्ट रीडिंग ए जे गुटे रीडिंग रो धरो डिफरेंस हला 0.5 धरो x इज इक्वल टू हला 0.5 ताले 10x केते हबो ताले 10x हबो योर 5 10x हबो 5 तेणु 5 मिलीलीटर नहीं हमको 100 मिलीलीटर करला पड़े तेणु डाइल्यूशन केते टाइम्स हेला 20 टाइम्स तेणु सेही जे तुमरो डाइल्यूट एसिड रो नॉर्मलिटी बाहर करी सेथिरे 20 मल्टीप्लाई कर देले तोर आसी जीवा कोन आसी जीवा बेंच एसिड रो नॉर्मलिटी एंड बेंच एसिड रो नॉर्मलिटी n by 10 रो लिखिबो नाही बेंच एसिड रो नॉर्मलिटी लिखिबो n रे हला तेनु एति केला तर कैलकुलेशन वर्तमान हमर काम करिबा एटा तुमे मधो ए कैलकुलेशन ता न देखि कि भी मने रखिबो 10x घरो आसीला तुमरा 0.4 हम कोन सेटा 1 रु कम आसीओ घरो आसीला 0.4 0.4 हेले हमें केते मिलीलीटर बा 0.4 into 10 अर्थात 4 मिलीलीटर तो 4 मिलीलीटर नहीं ताको केते कले 100 मिलीलीटर तारे केते टाइम्स डाइल्यूट हैला 25 टाइम्स सेटा हला डाइल्यूशन फैक्टर तो डाइल्यूशन फैक्टर इज 4 मिलीलीटर converted to 100 milliliter then 100 by 4 is called dilution factor अर्थात हमें केते गुणा concentrated acid टाको dilution कर हमें के 8 यदि 0.5 हे थांदा ताले 20 टाइम्स हे थांदा यदि 0.4 हे थांदा ताले 25 टाइम्स एटा जहा आसीबो से अनुसार धरो हमर एटा आसला 0.9 धरो के पिलारा आसला 0.9 तामाने तुमे 9 मिलीलीटर नै 100 मिलीलीटर करिवो अर्थात डाइल्यूशन फैक्टर केते होला 100 by 9 times dilute तेणु डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 100 by x तेणु हमर x 100 by x कर देले तुमरा डाइल्यूशन फैक्टर आसी 100 by 10x आसी 10x अर्थात 5 मिलीलीटर नहीं 100 मिलीलीटर कले दैट इज 20 टाइम्स डाइल्यूटेड अर्थात दैट इज 10 by x तो डाइल्यूशन फैक्टर
is equal to 10 by x. X टा हला तुम्हारा ए जे बेंच एसिड रो अप्रोक्सीमेटेड टाइट्रेशन कला बेले जो ब्यूरेट रीडिंग आसीबो सही x वैल्यू टा एठी बसिबो तबे हमें सेटा हमको देखि दवा student. Now you see, now we have to show the bench acid approximate normality. How to calculate the approximate normality of the bench acid? That is, we are given 2n, no doubt, but how to calculate the approximate normality? So for the calculation of approximate normality, 10 milliliter of this n by 10 order alkali will be taken in the conical flask, and that to be titrated against the bench acid. And because this bench acid is highly stronger, so this will consume very less amount in the order 0.5 milliliter as we have calculated last day. So it is approximately 0.5. So madam will show you how the bench acid is titrated against n by 10 alkali. Now welcome students. Thank you sir. So here already I have told you in the last titration that there are two pipettes. Now I show you. So this is a volumetric pipette and this is a graduated pipette. So this is about the pipette. Now regarding this bench acid titration, already a burette has been rinsed, filled with the solution and fixed in the burette stand, and this burette is containing your 2N acid HCl, that is your bench acid, and we are going to take this given alkali, that is NaOH solution, with this volumetric pipette and titrate. Now it's up to this mark. Mark is here. Then I'm going to transfer it in the conical flask slowly. So after the solution is being transferred to the conical flask, just tap the pipette at the end thrice. Once I have done, next is twice, and that is thrice, not more than that. So that the solution at the tip of the pipette will be drained out into the conical flask. Next, I am adding methyl orange indicator to the conical flask. 1 or 2 drops you can add, so that initial color will be your straw yellow color or yellow color. Next, we are going to add this bench acid drop wise to see this titration. So burette has to be fixed at a lower neck, just close to the conical flask. This is the proper way of fixing a burette. Now before leaving the hands, make sure the burette is fixed properly. Next, we are going, initial reading is your 0 ml, and now we are going to titrate it and see what's the final reading or where the reaction completes. Now I am opening the knob and just follow the titration. You can put drop wise. Now you have to be very cautious and careful, as it is according to this value you have to dilute the solution, and dilution factor will be derived. So make sure there should not be an error in your reading. So you have to adjust the knob of the burette drop wise to get an accurate value. Now we are approaching towards this end point.
Now you see we have the reaction is completed and we have got the end point as light pink color. Now the value here it is 0.5 ml. Now you see, because this is a very very highly concentrated one, 20 times concentrated the alkali taken, so it will be very less. So it comes to final burette reading comes 0.5. So X will come to 0.5. X will come to 0.5. So that means the volume of acid taken in the measuring flask or volumetric flask, that will be 5 milliliter. And this 5 milliliter acid to be diluted in a 100 milliliter flask. So 5 milliliter to be diluted in a 100 milliliter flask. So 100 milliliter measuring flask is totally rinsed thrice with the distilled water. Then you take 5 milliliter directly from the burette, because the burette contains the bench acid. Now madam will take 5 milliliter of acid from the burette to the measuring cylinder. Then how it will be diluted, she will show you. So now I am taking from the solution. Now I have drained some amount of solution from the burette as a bench acid. For this accuracy, I am just pipetting this solution. So 0.5 maybe. 5. Madam is using graduating pipette. Otherwise, it can be taken directly from the burette itself also. So the maintaining accuracy, I am just using a graduated pipette. Now I am taking 5 ml of this bench acid in a 100 ml volumetric flask. Then we are going to dilute the acid. Now this is 5 ml. For accuracy I have taken. Next we are going to add water. Now we have taken 5 ml of the bench acid into a volumetric flask and diluted to 100 ml. This is a wash bottle and I am just taking the solution from the wash bottle into the volumetric flask to make a dilute solution. Now you see the volume up to this. So I had made the volume up to 100 ml. So we have already diluted the bench acid. So here with this diluted acid, we are going to find out the volume of the standard alkali which is given to you. So here I am removing this bench acid from the burette which I had taken for dilution.
Now we have drained out the total bench acid from the burette, and as we are going to take the dilute solution in the burette, so we have to wash it. If you don't wash it and take this directly the diluted solution, then your concentration will be changed, or you will get in an different value, or there will be error in reading. So that's why I'm just washing the burette. Already you know how to wash the burette. Next I'm going to rinse the burette and fix the burette with the bench acid, diluted one. Diluted benches. Diluted bench Bench acid. acid diluted. Right. So now I have already just washed, then I will be rinsing with this diluted bench acid which I have made. Then I have to fill the burette with this diluted bench acid. Now here I am rinsing with the diluted bench acid. The same process has to be followed while rinsing. You have to take some amount, then you make the burette horizontal, roll it, and then again drain it. Now the solution is drained from the burette. Now I am filling the burette for titration with the diluted bench acid. Do remember it. Now the same process, you have to take the solution above 0, then you have to maintain the air gap below, then you have to fix the burette. Now I am maintaining the air gap. You can see bubbles are coming out. Now I have to check. Now the initial point is 0. Now I have to fix the burette with keeping the conical flask below. Students, it should be with your right hand. I am doing it in my with right hand side, so not. And now you have to fix this burette for titration with a diluted bench acid. Now the burette is fixed. Now we are going to titrate with the same alkali which has been given to you. Yep, yes. You have to hold the pipette properly as usual. Now you have to adjust slowly, dropwise, till we get the mark. Now it's 10 mm. You can see the mark over here.
Now I am just transferring the solution to the conical flask. Then after transferring, I have to again touch the tip thrice, tap, first, second and third. Now we are adding methyl orange indicator to the solution. And do the titration. Do remember that don't open the knob. You have to continuously shake the conical flask while the solution from the burette is being taken, so that the reaction should be complete. Now we have got an endpoint, perfect endpoint. So the value is, just check the value, sir. Final grade. Over. Yes, sir. I had started from 0, you just check it out. Over to you, sir. It is 8.5, whatever it may be. The final grade reading is 8.5, difference is 8.5 millimeter. And with this, you get you three concurrent values of the order 8.5. Whatever it may be, you get three concurrent values, identical values. There should not be any difference of it. There should be three identical values. Let it be 8.5 concurrent value, let it be 8.5. So then you can calculate the normality of the diluted acid. Normality of diluted bench acid. Because you have diluted the bench acid, taking 0.5 ml to 100 milliliter. 0.5 ml to 100 milliliter. So normality of the diluted bench acid, how can you calculate? So your volume of alkali is 10 milliliter. Normality of alkali is 1.02 n by 10. That is given to your in your question. This is your normality of alkali. This is your volume of alkali. Volume of acid is 8.5. Volume of acid is 8.5. Then you can calculate the normality of acid. So normality of acid by the equation V1N1 is equal to V2N2. So normality of acid will be equal to 10 into 1.02 n by 10 divided by 8.5. This 8.5 is to be divided by this. So that will give you the normality of acid. So 10 will be cancelled. So 1.02 divided by 8 by 10, and that will give you the normality of some order 8.1 and something like that order will be getting. So by this you can get the normality of acid. So normality of acid is equal to volume of acid, volume of alkali into normality of alkali divided by volume of acid. That is your burette reading. Volume of acid will be obtained from the burette reading. READIN. So this is what you calculate. This is in the order n. So
So this is your normality of the what? Normality of the dilute acid. The normality, so bench acid normality will be, bench acid is the stronger one. Bench acid normality will be your 1.02 by 8 n into how much? Into what extent you have diluted. You have diluted what extent? You have diluted for 20 times because you have taken 20.5 milliliter and make it 100. So this is 100 by 0.5, that is the dilution factor. So normality calculated of the dilute acid into the dilution factor, that means what extent you have diluted. You have taken 0.5 milliliter in the measuring flask and make it up to 100 milliliter. So it is diluted 20 times. You diluted 100 by 5. So it is diluted 20 times. So now if you multiply that factor in the normality of the bench dilute acid, and that will be give you the stronger acid. So stronger acid concentration or bench acid concentration will be your concentration of the dilute acid into the factor to which you have diluted. So to what extent you have diluted? You have diluted by taking 5 and making into 100 milliliter. Making into 100 milliliter. 20 times diluted. So if you multiply this into 20, that will give you the normality of the bench acid in the order n. Don't write down in the order n by 10. You write the normality of the bench acid because this is a concentrated one. It should not be written in the decinormal form. It should be written in the normal form. This is how you can calculate the exact normality of the bench acid. The exact normality of the bench acid. So exact normality of the bench acid is to be calculated first by diluting the acid, and from the dilute acid you first calculate the normality of the dilute acid, and in the normality of the dilute acid you multiply the dilution factor. Dilution factor means to what extent you have diluted. I mean, if you have taken 5 ml, make it 100 milliliter, that means it is 20 times diluted. So in the dilute acid, if you multiply 20, the concentrated acid or bench acid concentration can be calculated. Thank you all of you. This is all regarding bench acid titration.